Assalamualaikum to all my dear students. I am Fazila Parekh from AI Mullah High School, Umarwada, Standard 10, Subject Hindi. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે 14મું લેસન મેરી માં ગદ્ય છે જે શીખવાનું છે. મેરી માના લેખક છે રામપ્રસાદ બિસ્મિલ. રામપ્રસાદ બિસ્મિલનો જન્મ 1887માં થયો અને મૃત્યુ 1927માં થયું. रामप्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था. उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पिता माँ रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे. पिता साधारण पढ़े लिखे थे. कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई. उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की. स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी. आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए. काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सज़ा हुई और वे शहीद हो गए. आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्रिकाओं में लिखते रहे. बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए. आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे. जो આપણા લેખક રામપ્રસાદ બિસ્મિલનો જન્મ શાહપુર ઉત્તર પ્રદેશમાં એક સાધારણ પરિવારમાં થયો હતો. તેમના જન્મના થોડા જ વર્ષોમાં તેમના પિતા રોજીરોટીની તલાશમાં એટલે કે શોધમાં ગ્વાલિયરની પાસે આવેલા ગામમાં રહેવા લાગ્યા. પિતા સાધારણ ભણેલા હતા. તેઓ કચેરીમાં સરકારી સ્ટેમ્પ વેચીને પરિવારનું પાલન પોષણ કરતા હતા અને બાળકોને શિક્ષણ પણ આપતા હતા. ઉર્દુ મીડિયમમાં તેમણે 2 વાર પરીક્ષા આપી છતાં પણ અસફળ રહ્યા. પછી તેમણે અંગ્રેજી મીડિયમમાં પઢાઈ કરી. તો આપણા જે લેખક છે તે સ્વાધ્યાયથી બાંગ્લા ભાષા શીખી. શરૂઆતમાં તેઓ આર્ય સમાજની પ્રવૃત્તિઓથી જોડાયેલા હતા. પછીથી ક્રાંતિકારી સંગઠનમાં સક્રિય થઈ ગયા. કાકોરી રેલ ડકૈતી કાંડનો મુખ્ય અભિયુક્ત માનીને તેમને ફાંસીની સજા આપવામાં આવી અને તેઓ શહીદ થઈ ગયા. શરૂઆતમાં તેમણે રામ તથા અજ્ઞાત નામથી પત્રિકાઓ લખતા હતા અને બાંગ્લામાંથી હિન્દીમાં અનુવાદ કરતા હતા. આત્મકથા ફાંસી થવાના 2 દિવસ પહેલાં જેલમાં તેમણે પૂર્ણ કરી હતી અને તેમણે બહાર મોકલી હતી, જેમનો કંઈક અંશ श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम थी छपायो हतो. बराबर. आज मेरी माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है. माँ આપણે પણ માં શબ્દ બોલીએ તો આપણું મોં કેવું ભળાઈ જાય છે ને. તો તેવી જ રીતના અહીંયા લેખક કહે છે કે માં કેવલ આપણને જન્મ નથી આપતી, આપણા વ્યક્તિત્વનું નિર્માણ પણ કરે છે. માં બાળકનું પાલન પોષણ, शिक्षा दीक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण में माँ का बहुत योगदान होता है. माँ हमारा पालन पोषण करती है,
हमें शिक्षा दिलाती है, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। सबसे ज़्यादा हमारी माँ का हाथ होता है। माँ के उपकारों से ऊण होना बहुत मुश्किल है। यह जो प्रस्तुत संस्मरण में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने चरित्र निर्माण में अपने माँ के योगदान का भावभीमना वर्णन करते हुए अपनी असमर्थता के कारण श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करने की अपनी इच्छा पूर्ण न हो पाने का दुख व्यक्त किया है। हमारे लेखक राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और अपना संस्मरण यहाँ पे दिया है और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से अऋण होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। यह बात मेरी माँ में हमारे लेखक राम प्रसाद बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की नाजुक आयु में विवाह कर उनके गांव शाहजहांपुर आई थी। उस समय तक उन्हें गृह कार्य की भी जानकारी नहीं थी। बिस्मिल की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर उन्हें गृह कार्य की शिक्षा दिलाई थी। बिस्मिल की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने अपने घर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से अक्षर पढ़ना लिखना सीखा था। अपने परिश्रम के बल पर कुछ दिनों में ही वो देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी थी। लखनऊ कांग्रेस में जाने की बिस्मिल की बड़ी इच्छा थी, पर उनके दादाजी एवं उनके पिताजी को यह पसंद नहीं था। फिर भी उनकी माँ ने उन्हें खर्च देकर जाने दिया। इसी तरह शाहजहांपुर सेवा समिति में भी वे सहयोग देते थे, पर पिताजी और दादाजी को यह अच्छा नहीं लगता था। उनकी माँ ने इस मामले में भी उनका साथ दिया था। बिस्मिल के दादी जी एवं पिताजी बचपन में उनका विवाह करना चाहते थे, पर उनकी माताजी कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माँ के कारण ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल गया था। एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो बिस्मिल से करा ले। वकील ने उनसे वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बिस्मिल कहते हैं कि यदि उन्हें ऐसी माँ न मिली होती तो उन्होंने भी अति सामान्य मनुष्यों की तरह संसार चक्र में फंसकर जीवन बिता दिया होता। उनकी माँ ने शिक्षा आदि के अलावा क्रांतिकारी जीवन में भी मेजिनी की माता की तरह उनकी सहायता की। बिस्मिल कहते हैं कि वे इस जन्म ने ही नहीं अनेक जन्मों में प्रयत्न करने पर अपनी माँ से ऊर्ण नहीं हो सकते। वे अपने जीवन को सुधारने, देश सेवा में संलग्न होने में सहयोग देने, धार्मिक जीवन में सहायता करने, शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग देने आदि का श्रेय अपनी माँ को देते हैं। वे अपनी माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनका केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनकी आत्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति में
सदा सहायता की। केवल उनकी एक ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं होती दिखाई देती, वह है श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना। अब इसके बदले उन्हें उनकी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। बिस्मिल अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी भी तरह से विचलित न हो और वे उनकी माँ के चरणों का प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग सके। आ આપણે આપણા આખા પાઠનો સાર જોયો છે। હવે આપણે પાઠ વાંચતા જઈને સમજીએ। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। जुओ, અહીંયા લેખક પોતાના સંસ્મૃતિક યાદોની વાત કરે છે। લખનઉ કોંગ્રેસમાં તેમણે જવાની એટલે કે બિસ્મિલને જવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી, પરંતુ તેમના દાદી અને પિતાજી વિરોધ કરતા હતા। પરંતુ તેમની માતા તેમને પૈસા આપીને તેમનો ખર્ચ આપીને તેમને મોકલે છે। તે સમયે શાહજહાંપુરમાં સેવા સમિતિનો આરંભ થયો હતો। કયા સમયે? જ્યારે બિસ્મિલની મા 11 વર્ષની નાજુક આયુમાં વિવાહ કરીને તેમના ગામમાં આવી હતી, શાહજહાંપુર આવી હતી, ત્યારે શાહજહાંપુરમાં સેવા સમિતિનો આરંભ થયો હતો। મેં ઘણો જ ઉત્સાહમાં હતો કે સેવા સમિતિમાં સહયોગ કે મેં ઘણા ઉત્સાહથી સેવા સમિતિમાં સહયોગ આપતો હતો। પિતાજી અને દાદીજી મારા આ પ્રકારના કાર્યો તેમને સારા લાગતા ન હતા, પરંતુ મારી માતાજીએ મારા ઉત્સાહના ભંગ થવા દેતી ન હતી, જેના કારણે તેમણે અક્ષર પિતાજીની દાટ ફટકાર તેમજ દંડ સહન કરવો પડતો હતો। વાસ્તવમાં મારી માતાજી એક દેવી જેવી હતી। મારી માતાજીના કારણે જ મારું જે જીવન છે તથા મારી અંદર જે સાહસ આવ્યું છે તે મારી માતાજીના કારણે તેમજ ગુરુદેવ શ્રી શ્રોમજીની કૃપાઓના કારણે જ આવ્યું છે। દાદીજી અને પિતાજી મારા વિવાહના માટે ઘણો અનુરોધ કરતા હતા, પરંતુ મારી માતાજી કહેતા હતા કે શિક્ષા પત્યા પછી જ વિવાહ કરવું યોગ્ય છે। માતાજીના પ્રોત્સાહન તથા તેમના વ્યવહારને મેં મારા જીવનમાં દ્રઢતાથી આપત્તિ તથા સંકટ આવવા પર મેં આવો સંકલ્પથી કે આ રીતના સંકલ્પ કો ન ત્યાગા
એટલે કે ગમે તેવી મુશ્કેલી આવે છતાં પણ મેં મારા સંકલ્પને તૂટવા દીધો નહીં. બરાબર, એટલે કે તેણે પોતે એમ કે શિક્ષા પ્રાપ્ત કરીને પછી જ એમ માના કારણે મને એમ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો હતો. एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे कराना. कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूँ. मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा. इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता. वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ. न मैंने हस्ताक्षर किए. अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था. चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था. હસ્તાક્ષર જુઓ, એક સમયની વાત કરે છે કે એના પિતાજી દીવાની મુકદ્દમા કોઈના ઉપર દાવો કરીને વકીલને કહી ગયા હતા કે મારું કંઈ પણ કામ પડે તો કોનાથી કરાવી લે? બિસ્મિલથી આ કાર્ય કરાવી લે. પરંતુ આવશ્યકતા પડને પર વકીલે મને બોલાવ્યો. પરંતુ તે વકીલે મને ત્યાં બોલાવ્યો અને વકીલે કહ્યું કે વકાલતનામા ઉપર હસ્તાક્ષર એટલે કે દસ્તખત, સાઇન, સહી વકીલતનામા પર પિતાજીની સાઇન કરી આપ. તો આ તો ગલત કહેવાય ને, બીજાની સાઇન કરવું. તો મેં તરત જ ના કહી દીધું કે હું સહી કરું નહીં, આ તો ધર્મ વિરુદ્ધ કામ થશે. આ પ્રકારનો પાપ હું કદી પણ કરી શકું નહીં. વકીલે મને ખૂબ જ સમજાવ્યો કે જો તું આવું નહીં કરશે તો આ મુકદ્દમો, કેસ શું થઈ જશે? ખારીજ થઈ જશે, એટલે કે બંધ થઈ જશે. પરંતુ મારા ઉપર એ વસ્તુનો કોઈ પ્રભાવ પડ્યો નહીં, એટલે કે એનાથી મને કોઈ અસર થઈ નહીં. પણ મેં હસ્તાક્ષર કર્યા નહીં. પોતાના જીવનમાં હંમેશા સત્યનું આચરણ કરતા હતા. ચાહે કંઈ પણ થઈ જાય सत्य बात कही देता था. 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी. उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थे. જુઓ, 11 વર્ષની ઉંમરે બિસ્મિલની માતા શાહજહાંપુર લગ્ન કરીને આવી હતી. જે સમયે તે લગ્ન કરીને આવી હતી તે પ્રમાણે એક ગામની છોકરી, ગામડાની છોકરી કેવી હોય એવી માન્યતા છે કે ગામડાની છોકરી અશિક્ષિત હોય છે. પણ હવે એવું કંઈ હોતું નથી. ગામડામાં પણ શિક્ષિત લોકો જોવા મળી જાય છે. પણ પહેલાંની વાત કરેલી છે એટલે શું કહે છે કે ગ્રામીણ કન્યા કે સમાનથી, એટલે કે ગામડાની છોકરી જેવી હતી કે એકદમ અશિક્ષિત હતી, એટલે કે ભણેલું લીખેલું કંઈ ન હોય તેવી. शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया. उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी. જો શાહજહાંપુર એટલે કે શાહજહાંપુર જ્યાં તે લગ્ન કરીને આવ્યા ત્યાર પછી તેમની દાદીજીએ એટલે કે બિસ્મિલની દાદીજીએ એમની નાની બહેનને બોલાવી લીધા અને એમની માતાને એટલે કે બિસ્મિલની માતાને ગૃહ કાર્ય એટલે કે ઘરના બધા કામકાજ માટેની શિક્ષણ આપ્યું. थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी. થોડા દિવસોમાં જ મમ્મીએ એટલે કે માતાજીએ ઘરના બધા જ કામ સમજી લીધા હતા અને ભોજનાદિ એટલે કે ખાવા પીવાનો ठीक ठीक रीते प्रबंध करवा लगी. मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया. जो अपना लेखक बिस्मिलना जन्म थवाने 5 થી 7 वर्ष पछी तेमणे हिंदी पढ़वानी, कोणे? बिस्मिलनी माताए हिंदी पढ़वानी शुरुआत करी. पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था.
मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। જુઓ, એમની અંદર શિક્ષણ લેવાની જાતે જ શોખ હતો એમને. જો એમની સખી સહેલીઓ જે બધી ફળિયાની હોય ને મિત્ર આપણી, તો તે જ પોતાના ગળે બેહવા માટે આવતી, તો તેમની પાસેથી તેમણે અક્ષરબોધ એટલે કે અક્ષરો લખવાનું શીખતા થયા અને અક્ષરો समझता થયા. इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती. એટલે કે ઘરનું બધું કામ કરી લેવા પછી જે સમય મળે તેના અંદર તે શું કરતી હતી? ઘરનું કામકાજ કર્યા પછી આ પढ़વા लिखવાનું કામ सीखती હતી. परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी. એણે ખૂબ જ મહેનત કરી અને મહેનતના અંતે તેમણે દેવનાગરી પુસ્તકો એટલે કે હિન્દી ભાષામાં લખાયેલા પુસ્તકોને તે વાંચવા અધ્યયન કરવા લાગી એટલે કે સમજવા લાગી. मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी. એટલે કે આપણા લેખક બિસ્મિલ જે છે તેમની બહેનોને એમની માતાજી જ પછીથી શિક્ષણ કરાવતી હતી એટલે કે શિક્ષા આપતી હતી. जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माताजी से खूब वार्तालाप होता. જો જ્યારથી તેમણે પોતે આર્ય સમાજમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારથી તેની માતા સાથે તેનો ખૂબ વાર્તાલાપ થતો. उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं. અપેક્ષા એટલે કે તુલના મેં એટલે કે પહેલાં જે અભણ હતા તે અને હવે જે વાંચતા લખતા થયા તે પછી તેમના વિચારોમાં પણ ઘણો જ પરિવર્તન આવ્યું છે. તેમના વિચારો પણ ખૂબ જ ઉદાર થઈ ગયા છે. यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता. જુઓ, લેખક શું કહે છે? અગર જો મને આવી માતા ન મળતી તો હું પણ સામાન્ય માણસની જેમ जीवन निर्वाह में फंसाईने मारू जीवन संसार चलावतो होते. शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है. जो शू कही है कि अतिरिक्त क्रांतिकारी એટલે કે કોઈ પ્રકારની ક્રાંતિ ચાહવાવાળા ક્રાંતિकारी जीवन में પણ તેમણે મને આ જ પ્રકારે સહાય કરી છે. जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी. माताजीने એટલે કે એમની માતાએ તેમને ખૂબ જ સહાય કરી છે. माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो. प्राण हानि यानी कि जान का नुकसान. तो माताजी ने सबसे पहला लेसन उन्हें क्या दिया था कि कोई भी कार्य करे लेकिन किसी की जान का नुकसान नहीं होना चाहिए. उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना. उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी. जो શું કહે છે કે એમની માતાના હંમેશા એવું કહેતા હતા કે પોતાના દુશ્મન શત્રુ એટલે કે દુશ્મનને પણ કોઈ દિવસ પ્રાણદંડ એટલે કે મૃત્યુદંડ આપવો નહીં. અને એમના આ આદેશને પૂર્ણ કરવામાં જ મજબૂરન તેમણે 1-2 વાર એમની પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરવો પડ્યો હતો. जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला. इस जन्म में तो क्या यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऊ ऋण नहीं हो सकता. जो ऊ ऋण यानी कि ऋण से मुक्त એટલે કે આપણા માતા પિતાએ જે આપણા માટે કર્યું છે તો શું આપણે ચૂકવી શકીએ છીએ? આપણે એવું કહીએ છીએ ને કે માના દૂધનું કર્જ આપણે ચૂકવી શકવાના નથી. આ જન્મમાં પણ શું અગલા ગમે તેટલા જન્મો લઈએ તેમાં પણ આપણે માતાનું કર્જ ચૂકવી શકવાના નથી. તો અહીંયા કવિ શું કહે છે? જન્મ આપનારી જનની એટલે કે જન્મ આપનારી માતા તારું ઋણ ચૂકવવાનો પ્રયત્ન આ જીવનમાં મને મળ્યો
નથી, પરંતુ આ જીવનમાં તો શું અનેક જન્મોમાં હું પ્રયત્ન કરું તો પણ હું તારું કર્જ चुकवी सकवाना नहीं। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। जो शू कहे छे कि जे प्रेम तथा दृढ़ताथी ते मारा जीवन में सुधार कर्या छे ते केवा छे अवर्णनीय छे, कि जेनुं वर्णन हूँ करी सकतो नथी। मारा जीवननी अमुक घटनाओं मने याद छे कि ते मने जे प्रकार तमे देववाणीना उपदेश करके मने सुधारी दीधो छे, देववाणीना उपदेश करीने मने सुधार्यो छे। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, एटले के एनी मातानी दयाना कारणे ज ते देशना काममां पण आवी सक्या। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो लेखक शू कहे छे, देशनी सेवानी साथे साथे धार्मिक जीवन में पण तारा एटले के माता तारा प्रोत्साहनथी ज मने सहायता मળી छे। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्हें को ही जाता है। એટલે કે जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मेरा मस्तक झुक जाता है। जो શું કહે છે કે તે જે મને ઉપદેશ આપ્યા હતા તેનાથી જ મેં સુધરી શક્યો છું, અને તારે જે તુએ જે મને ધાર્મિક જીવનમાં પણ તારા કારણે જ મને પ્રોત્સાહન મળ્યું છે, તેમજ જે શિક્ષણ મેં ગ્રહણ કર્યું છે તે પણ તેનો શ્રેય પણ તને જ જાય છે, તેનો યશ પણ તને જ જાય છે। અરે માતા, એમ તારા ઉપદેશના કારણે જ એમ શું કહે છે, તારા તે જે મનોહર રૂપથી મને ઉપદેશના કારણે જ એમ તારા સ્મરણ કરતા એમ તારી મંગલમય મૂર્તિ મારા ધ્યાનમાં આવી જાય છે, એટલે કે દિમાગમાં આવી જાય છે, અને મારું મસ્તક तड़क झुकी जाए छे। उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। शू कहे छे लेखक, ताड़े मने तो तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई, ताड़ना यानी कि कष्ट पहुँचाना, એટલે કે કષ્ટ પહોંચાડવાનું પણ કંઈક થયું તો તે મને ખૂબ જ સ્નેહથી એ વાતને સમજાવી દીધી હતી। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जुओ शू कहे छे लेखक कि अगर जो कोई दिवस एम मैं धृष्टतापूर्ण एटले के कथन अवाज में तारी साथे दढ़ाईपूर्वक दुस्साहसपूर्ण रीते तारी साथे बात करी होय त्यारे पर तुए मने प्रेमना भर्या शब्दोथी मने एवुं ज कह्युं छे कि तने जे सारूं लागे ते कर, परंतु जो तू आ करशे तो एनुं परिणाम सारूं आवशे नहीं। आ रीते तुए मने समझाव्यो छे। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। जो शू कहे छे, जीवनदात्री, जीवन देने वाली माता, तमे मने एम कि आ शरीर ने जन्म आपीने केवल मारू पालन पोषण ज नथी कर्युं, परंतु मने ते आत्मिक, आत्माना संबंधी, धर्मना संबंधी તેમજ સમાજમાં ઉન્નતિ લાવે તેવી સદૈવ સહાયક રહી। જન્મ જન્માંતર એટલે કે અનેક જન્મો સુધી પરમાત્મા આવી જ માતા મને આપે। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, એટલે કે ગમે તેવી મુશ્કેલીમાં પણ તે મને
અધીર ગભરાવા દીધો નથી, વ્યાકુલ થવા દીધો નથી। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही, એટલે કે ધીરજ આપતી રહી। सांत्वना यानी કે ધીરજ देना। તો ગમે તેવી મુશ્કેલ ઘડીમાં પણ તે મને હંમેશા પ્રેમ ભરી વાણી સંભળાવીને શું આપતી રહી? सांत्वना आपती रही, दिलासो आपती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। केवल मारी एक ज इच्छा है कि तारी श्रद्धापूर्वक तारा चरणों सेवा करीने मारा जीवन ने हूँ सफल बनावी लें, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। शू कहे छे? परंतु मारी आ इच्छा पूरी थती नहीं अने तने मारा मृत्युनी दुख भरी खबर सांभळवा मळशे। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जो लेखक शू कहे छे कि माँ, तने एम कि तारा चरणों में मने नमवानी तारी सेवा करवी हती, परंतु ए पण हवे पूरी थवानी नथी। परंतु ज्यारे तू एम सांभळे कि तारा पुत्रनु मृत्यु थई रहेवानुं छे, आ खबर सांभळीने तू धीरज धारण करजे अने तारा पुत्रए माताओनी माता भारत मातानी सेवामां पोतानुं जीवननुं बलिदान आपी दीधुं छे। पोतानी तारी कोखने एणे कलंकित करी नथी, एम कलंक लगाव्युं नथी अने पोतानी प्रतिज्ञा पर ते दृढ़ रह्यो छे। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। शू कहे छे लेखक? ज्यारे स्वाधीन भारतनो इतिहास लखवामां आवशे त्यारे तेना पृष्ठ पर, तेना पानाओ पर तारू नाम पण लखवामां आवशे। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों को बलिदान पर बिठाई बाती थी। जुओ, गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नीए ज्यारे पोताना पुत्रनी मृत्युनी खबर सांभળી त्यारे ते खूब ज खुश थई जाय छे अने गुरुना नाम पर धर्म रक्षार्थ एटले के धर्मना रक्षणना माटे पोताना पुत्रना बलिदान पर मिठाई वहेंची हती। जन्मदात्री वर दो की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करो। जो शू कहे छे लेखक? जन्मदात्री जन्म आपवा वाली मारा अंतिम समय में पण मारा हृदय में कंईक चंचल एम विचलित एटले के दीघा न ऊभी थाय तेना विचलित न थई जाय अने तारा चरणों कमलना प्रणाम करीने मैं परमात्माना स्मरण करतो जाई शरीर ने त्याग करी दऊं। आवुं लेखक आपणा कहे छे। आ पाठमां लेखके पोतानी माता विषे जे वखाण कर्या छे, पोतानी माता विषे कह्युं छे कि मातानुं ऋण आपणे चूकवी शकता नथी। आपणे बधानी पण माता छे, शुं आपणे आपणी मातानुं ऋण चूकवी शकीशुं? आपणी माता पण आपणा माटे घणुं बधुं करे छे ने। तो अहींया आ पाठ परथी आपणे बोध लेवानो छे कि आपणी माता पण आपणा माटे घणुं बधुं कार्य करती होय छे। आपणी मातानो आपणे ऋण कदापि चूकवी शकवाना नथी। जेथी आपणे आपणी माताने शुं करवानुं छे? प्रणाम करवानुं छे। आपणी माताना आपणे कोई दिवस कर्ज चूकवी शकवाना नथी। आपणे आपणी मातानी इज्जत करवी जोईए।
બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો પાઠ પૂર્ણ થાય છે અને થેન્ક યુ.